for yet another blissful satsang. Guruji used to say Shivpuran padhya karo, and this is exactly what we're trying to do here at Guruji ka Ashram, Somerset. We try to read the Shivpuran in English and Hindi every Monday after the mantra jap. So if you're interested in participating in the reading, kindly contact Seema Aunty or me. Last week we read chapter 6 and 7 of the Rudra Samhita. In this we read that Brahma tried to describe the Mahapralaya. He said that at the time of great dissolution, when there was nothing, every object was engulfed in deep and great darkness, there was no sun, moon, stars, and everything was just a void. The Supreme Being, the one that did not have any form, desired an auspicious form for himself, and he thought that it should have the same powers, the same knowledge and the same qualities as him. So he created Ishvara, which is also called Sadashiv. Now Sadashiv from his body created Shakti, which is also called Prakriti, Maya and several other names. Now these two deities, Shiva and Shakti, wanted to create one more being so that they could entrust all the responsibilities onto him and could freely roam in Kashi. So from the left limb of Shiva, Vishnu was created. Vishnu was the most charming amongst all in the three worlds, and he had great patience and a predominant sattva gun. Now Vishnu asked Lord Shiva for guidance, so Lord Shiva told him to perform great penance and also bestowed all kinds of knowledge of Vedas through his nostrils to Vishnu. Vishnu performed great penance for 12,000 years, and his only desire was to see Shiva, but he could not achieve it. He then respectfully meditated on Shiva to guide him, and then a voice told him that he should perform the penance, but this time without doubt. So he performed penance for several years and became enlightened. And when he was performing that, there was a flow of water currents from his body because of Shiva's grace, and that water filled up the void that was there during the Mahapralaya. Vishnu, because he was tired, he slept in this water, this divine water, and that's why he's also called Narayan, which means the one who has water abode. As he was sleeping, Shiva desired to create something else, and what he did was that through Shiva's power, there was a huge lotus that was created from the navel of Lord Vishnu, and this huge lotus had the brightness of 10 million suns. And then from his right limb, Shiva produced Brahma, and he, with his power of illusion, deluded Brahma, and then he produced him from the umbilical lotus of Lord Vishnu. Now since Brahma was deluded by the powers of Shiva, he wanted to know who he was, and that is why he thought that he wants to know more about his progenitor. He thought that since he has originated from this lotus, he should go deep down to the source of the lotus, and there his progenitor will be. So he went deep down and traveled hundreds of years, but he could not reach the source of this lotus. Then he decided to come back to the top, but he was unable to do that for the next few hundred years. He was tired. Then a voice spoke to him that he should perform penance, and when he performed penance, after 12 years, he got Lord Vishnu in front of him, because Lord Vishnu was his progenitor, but because he was still deluded by Shiva's illusion, he boasted in front of Lord Vishnu as the creator of the three worlds, and Lord Vishnu got angry and told him that Brahma had indeed originated from the umbilical lotus of Lord Vishnu. Then started the great battle between Brahma and Vishnu. Both of them got into a terrific battle, and to end that battle and enlighten both of them, there was a huge column of fire that erupted between the two of them. This column had no beginning, no end, no middle. Both were amused to see it. They were almost unconscious, and they wanted to decide who is more supreme. So they explored this column of fire. They decided that whoever reaches the end of this column of fire would be supreme. So Brahma took the form of a swan, went to the top of the tower to search the top of the tower, and Vishnu assumed the form of a boar to see the bottom end of this
fiery column. Both traveled thousands of years, but they did not reach the ends, and they were exhausted. They came back, and when they came back, they bowed down in front of the fiery column and asked for forgiveness, and also requested the great power, the Supreme Being, to reveal itself. Today we will be reading chapter 8 and chapter 9. It is the description of the body of Shabd Brahman and description of Shiva Tattva. I will be reading in English and Rashmi Aunty will be reading in Hindi. Jai Guruji. Jai Guruji, chapter 8, the description of the body of Shabd Brahman. Brahma said, O most excellent sage, we were eager to have the vision of the Lord. Our haughtiness has been curbed. O sage, we waited there patiently. Shiva, the protector of the distressed, remover of the haughtiness of the haughty, and the undecaying Lord of everything, took mercy on us. There arose the sound, Om, Om, in the prolated ascent. It was very clear. The divine sounds in the form of a word came out from the most excellent of gods. What shall be this great sound? Thinking like I stood perplexed, Vishnu, who is worthy of respect from all gods, who is free from all inimical thoughts, saw this with a delightful heart, the eternal being's manifestation on the right side of the linga. First he saw a syllable A, and then he saw syllable U thereafter. He saw the syllable M in the middle of the nada, in the form of Om in the end. He saw the first syllable on the right like a blazing sphere of the sun. O foremost of sages, thereafter he saw a syllable U, dazzling like fire. In the middle he saw a syllable M, glittering like a lunar sphere. Above that, what he saw was the Supreme Brahman, the greatest refuge. It had the luster of pure crystal. It was the pure being beyond the fourth, the unsullied and free from the extraneous harassment. It was free from the mutually clashing opposites. It was single, void, free from exterior and interior, though stationed in the exterior and the interior, devoid of beginning, middle and end, the primordial cause of bliss, the truth, the bliss and the nectar. Vishnu thus meditated on the universal soul, enveloped by the two Vedic sounds, and wished to examine the source whence the fire column arose, and to go deep down the unequalled fiery column. Then there came a sage who told him the essence of the truth. Vishnu realized that the sage himself was a great lord and the supreme Brahman embodied in the Shabd Brahman. The Brahman is Rudra free from worries. The words and mind are incapable of comprehending it. Without reaching it, they return. It can be expressed by a single syllable mantra, Om. The Supreme Brahman, the truth, the bliss, the Amrit, the great of the great, and the ultimate cause can be expressed by the single syllable mantra. The single syllable A is the source of the Lord Brahma. The single syllable U is the source of Vishnu, the ultimate cause. The single syllable M is the source of Rudra. The Creator is expressed by letter A. The Enchanter is expressed by the letter U. The being expressed by the letter M blesses always. It is all-pervasive and progenitor. A letter A is the seed. The being expressed by the letter U is Vishnu. It is the source, the receptacle, the Lord of the primordial nature and a primordial being, the progenitor, the seed, the source and sound. All these constitute Lord Shiva. The progenitor is stationed after dividing itself. From the linga of the progenitor, the Lord arose, the seed, the syllable A. The bija being deposited in the yoni, the letter U began to increase all around. It became a golden egg. It was something known which could not be delineated. The divine egg floated in the waters for many years. Then, at the end of 1,000 years, it split into two, giving birth to Brahma. The egg floating in the waters on being hit by Ishvara split into two. The auspicious golden upper lid became the upper region and the lower one became earth of 5 characteristics. From the egg was born four-faced Lord Brahma, expressed by the letter Ka. He is the creator of all the worlds. He alone is the Lord manifesting in 3 forms.
Persons well versed in the Yajurveda call him Om, Om. On hearing the word of Yajurveda, both Rigveda and Samveda respectfully called us Vishnu and Brahma. Then realizing the Lord of gods, we were eulogized as far as we could. Lord Shiva, the cause of great achievement. Vishnu, the protector of the universe, in the meantime saw another wonderfully beautiful form along with me. On seeing that wonderful form, Vishnu and I became satisfied. The form had 5 faces, 10 arms, and a complexion white as camphor, O sage. It had diverse and brilliant features. It was decorated in different ornaments. It was highly liberal and endowed with great prowess. It had the characteristics of a great man. Thereafter the Lord was pleased. Revealing his form embedded in the letters, he laughingly stood before us. A short letter A is his head. The long letter A is his forehead. The letter I is his right eye, and the letter I is his left eye. The letter U is his right ear, and the letter U is his left ear. The letter R is his right cheek of the great Lord. R is the left cheek. The 2 letters L are his nostrils. The letter E is his upper lip, and the letter L is his lower lips. The letter O and the letter O are respectively 2 rows of his teeth. The letter M and A are his palates. The 5 letters beginning with Ka, Ka, Kha, Gha, Gha, Na are his 5 hands on the right side. The 5 letters beginning with Ka, Ka, Cha, Cha, Jha, Na are his hands on the left side. Similarly, the 5 letters beginning with Ta and 5 letters beginning with Ta constitute his legs. The letter Pa is his belly and letter Fa is his right side. The letter Ba is his left side and letter Bha is his shoulder. The letter Ma is the heart of the great yogin Mahadeva. The letters Yara, Lava, Shasa, Ha are 7 dhatus of the Lord. The letter Ha is his umbilicus and letter Sha is his nose. Vishnu and I became contented on seeing the letter-embedded form of Shagun manifestation of Nirguna Lord in the company of Uma. On seeing Lord Shiva in the form of letters embedded Brahman, Vishnu bowed down along with me and looked up again. The mantra beginning with Omkara with its kalas 5 in number, consisting of auspicious 38 syllables, being pure as crystal, increases intelligence and is effective medium of accomplishing sacred rites. The mantras in the Gayatri meter of 24 syllables and having 4 kalas are conducive to enjoyment. The 5-syllable mantra of 8 kalas consisting of 38 syllables is employed for back magic. Mantras of Yajurveda consisting of 25 syllables and 8 kalas are used for conciliatory purposes. The mantras of 13 kalas consisting of 61 syllables is conducive to the outcome, increase and destruction. Lord Vishnu secured these 5 mantras: Mrityunjay mantra, 5-syllable mantra, Chintamani mantra, Dakshinamurti mantra and Tatsamasi mantra, which is Harar's Mahavakya. Lord Vishnu performed japa by means of these mantras. The Lord Vishnu and I, being glad at the heart of being eulogized, the boon bestowing Lord Shiva with appropriate words. Shiva, who was seen in the form of kalas, Varnas, Ring, Yajus, Saman, Isana, Isa, Puratana and Purusha, the merciful, pleasing to the heart, hidden from all, ever auspicious, a great deity of beautiful feet, bedecked with huge serpents with legs, eyes and hands extending on all sides, the Lord of Brahma and the cause of creation, sustenance and destruction of the world. Chapter 9. Description of Shiva Tattva. Brahma said, on hearing his own eulogy from the mouth of Vishnu, the delighted Shiva, the storehouse of kindness, revealed himself to us along with his consort. He had 5 faces and 3 eyes, and the crescent moon on his forehead. He wore matted hair. He was white-complexioned and had wide eyes. His body had been dusted with ashes. He had 10 arms. His neck was blue in color. He was bedecked with all ornaments. He was very handsome with respect to every limb. 3 ash-line marks his forehead. On seeing Lord Vishnu accompanied by his beautiful consort, Vishnu along with me eulogized him again with appropriate words.
Shiva, the merciful, who was delighted, breathed the Vedas into Vishnu and conferred perfect knowledge onto him, the secret of Supreme Atman. O sage, thereafter, out of sympathy, the Supreme Atman conferred these onto me too. After receiving the Vedas, Vishnu was satisfied, and bowing to him with palms joined in reverence, along with me he asked Lord Shiva. Vishnu said, O Lord, how are you so propitiated? How shall I worship you, O Lord? How shall I meditate on you? How are you impressed by anyone? O great God, tell us what at thy bidding shall we ever do? Please command us, O Shiva, do this to favor us. O great Lord, be merciful to tell us all these things. O Shiva, we are your followers. Taking this into mind, you will enlighten us on these and other similar points. Brahma said. On hearing these words, the Lord Shiva was delighted. The merciful Lord then spoke lovingly. Shiva said, O foremost amongst gods, I am delighted by your devotion. Look upon me as a great deity. Cast off all your fears. Worship my linga and do always meditate upon the form which you see just before you. When I am worshipped in the phallic form, I will be delighted and will bestow different benefits upon people, all that they wish for in their minds. O foremost among deities, whenever any misery befalls you, it shall be destroyed when my linga is worshipped. O strong ones, you too are born of my own prakriti, out of my left and right sides. I am the Lord of everything. This Brahma, grandfather for all people, is born of my right side. You, Vishnu, are born of my left side. I am the Supreme Atman. Delighted, I shall confer on the boons and whatever you desire. May your devotion to me be steady. With my permission, you can make my form in clay and perform adoration. After rendering different kinds of services like this, sensibly you shall attain happiness. O Brahma, strictly adhering to my direction, you can carry the work of creation. Dear child, dear Hari, you shall sustain the mobile and immobile things. Brahma said. Saying thus, the Lord presented to us the auspicious mode of his worship. Adored duly by the means of Shiva, confers many benefits. On hearing the words of Shiva along with me, Vishnu bowed down to Shiva with palms joined in reverence and said. Vishnu said, If you are pleased, if a boon is to be given to us, may our devotion to you be perpetual and unstraying. Although you are Nirgun, be pleased to incarnate in the course of your divine sport and help us. Dear Lord, you are great Lord, the Supreme. O Lord of Lords, even our dispute has turned out to be auspicious now that you have come here to suppress the same. Brahma said. On hearing these words, Shiva told Vishnu, who stood there with the head bent down and palms joined in reverence. Shiva said, Although Nirgun, I am Sargun too, and the author of dissolution, maintenance and creation. I am the Supreme Brahman without decay and change. Existence, knowledge and bliss are my characteristics. Truly, I am Nishkal forever, O Hari. For the activities of creation, maintenance and dissolution, I manifest myself in three forms of Brahma, Vishnu and Hara. O Vishnu, since you along with Brahma have eulogized me and prayed for my incarnation, I shall make that request true, favorably disposed towards my devotees that I am. A great form similar to this, O Brahma, shall become manifest in the world through your body. He will be called Rudra. His capacity will never be less, since he will be my own part and parcel. He is I am he. In the modes of worship too, there is no difference. As heat, etc., in water and other things due to the contact of fire is not permanent in water, etc., similarly, my Nirgun aspect is not affected by my external contact. This form of mine, as Shiva, is that of Rudra too. O great sage, no one shall make any difference in it. The same form appears split into two in the universe. Hence Shiva and Rudra shall not be considered different. A piece of gold turned into an ornament does not cease to be gold. There are many differences in the name, but not in the material content. Just as the difference of clay and the various objects are made out of it, it is not the material one, so also in this case.
The presence of the material cause is the effect that can be cited as an example. This shall be known by all scholars and gods of unsullied knowledge. If you realize this, you will not be seeing the cause of difference. I think that we all should see the form of Shiva as basic material. Myself, you, Brahma and Rudra, who will be manifesting himself, are of the same form. There is no difference. If there had been a difference, that would have been a bondage. Yet, the eternal Shiva form is mine alone. That pure form is spoken of as the main root, the truth, the knowledge, the endless. Realizing this too, it must be meditated upon in true manner in your mind. O Brahma, another secret which I am going to unfold to you may be listened to. You too are born of Prakriti, but not this one. My command is carried to the place through Brahma's eyebrows. I am therefore spoken of as Tamas and Prakrit, Hara in respect to the gunas alone, and shall be known as Vaikarika too, which is actually the Ahankara or the ego. That is called Tamas only in name and not in reality. For this reason, O Brahma, they shall be carried out by you. O Brahma, you shall be the creator and Hari the protector. My would-be part shall be cause of dissolution. This goddess Uma, Parmeshwari, is the Prakriti. Her Shakti, the goddess of speech, shall resort to Brahma. Another Shakti will also be arising out of Prakriti. That Shakti will resort to Vishnu in form of Lakshmi. Another Shakti, Kali, will surely share my part. She will be born in the form of brilliance for effective work. Thus, I have told you the great auspicious Shaktis of the goddesses. Their activities are respectively creation, maintenance and dissolution. O foremost among gods, they are the parts of Prakriti, my beloved. O Vishnu, you shall carry on the activities with the cooperation of Lakshmi. O Brahma, with the cooperation of goddess of speech, the part of Prakriti, you shall carry on joyfully the activities of creation according to my direction. I shall have the cooperation of Kali, the part of my beloved, the greatest of the great, and shall carry out the excellent activity of dissolution in the form of Rudra. You shall be happy after the creation of the world consisting of the 4 varnas and their ancillaries, the 4 ashramas or the stages of life, and the various sorts of other incidental activities. You shall contribute to the welfare of the world, making use of your knowledge and perfect wisdom. O Vishnu, be the bestower of salvation too at my bidding. The benefit accruing from your vision will be the same as that of mine. This boon is given to you now. It is the truth, certainly the truth. Vishnu is in my heart and I am in Vishnu's heart. Those who make any distinction between the two do not know my mind. Vishnu is born of my left limb. Brahma is born of my right limb. Rudra, who causes great dissolution and who is the soul of the universe, is born of the heart. I manifest in the 3 forms, O Vishnu, known Brahma, Vishnu and Bhava. I am the author of creation, protection and dissolution by the attributes, rajas, etc. But I am different from these gunas and directly beyond Prakriti and Purusha. I am the supreme Brahman, the eternal, the endless, the perfect and the unsullied. Vishnu has tamas within but sattva outside. He is the protector of the 3 worlds. Hara, who causes dissolution of the 3 worlds, has sattva within but tamas outside. Brahma, who creates the 3 worlds, has rajas both within and without. This is the position of the gunas in the 3 deities. Shiva is spoken of different from the gunas. O Vishnu, guard lovingly this Pitama who is the cause of creation. At my bidding, you will be worthy of respect in the 3 worlds. Rudra shall be worshipped by you and Brahma. The author of dissolution of the 3 worlds is the complete incarnation of Shiva. In the Kalpa called Padma, Pitama will be born as your son. Then you will see me. The lotus-born Brahma shall also see me. After saying this and conferring unequaled mercy, the great Lord Hara again spoke lovingly to Vishnu. Chapter 9 completed. Thank you, Guruji, for this seva. Now Rashmi Aunty will be reading in Hindi. Jai Guruji.
जय गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद पलुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाला उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजों में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदनंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभाव से युक्त तुरायतीत, अमल, निष्कल, निरुपद्रव, निर्द्वंद, अद्वितीय, शून्य में ब्रह्मा और अभ्यंतर के भेद से रहित, ब्रह्मांतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप ब्रह्मा पर ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि यह शब्द ब्रह्मा में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र हैं। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर ही है। वह इसके वाच्यार्थ रूप हैं। वे परम कारण, रित, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर पर ब्रह्म एकाक्षर वाच्य है, एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा को बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीजी हैं और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है, प्रधान एवं पुरुष भी। ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह सुवर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की
उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वह द्युलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था, वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोकों के त्राष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और समाम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्रह्मा, यह बात ऐसे ही है। इस तरह शिव जी को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युद से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्व पालक भगवान विष्णु एक और अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उनकी कांति कर्पूर समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और इकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और ऊकार को बायां कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और ऋकार बायां। लृ और लृ ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर। ओकार और औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अंग और अंगा उन देवादिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ। ट आदि तथा त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि और क्षकार को मेंढ्र कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्मा में शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महाकाव्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणा मूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्रीहरि उनका जप करने लगे। तदनांतर ऋक, यजु और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईशों के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनके हृदय अघोर अर्थात सौम्य हैं, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुण सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्प राज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के आदिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक साम शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य उनके द्वारा अपने स्वरूप
का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनकी 10 भुजाएं थीं। कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्म में त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पाप हरि करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित्त होकर उन विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने, उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुहान ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सुरश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूं। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसे दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरा स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझे सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। यह लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु में मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वह पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभो, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि हमें आप वर देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि का यह बात सुनकर भगवान हरे पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उस नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सचिदानंद स्वरूप निर्विकार परब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्रह्मा, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और शिव में परायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप जब सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया है।
अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य, ज्ञान और अनंत ब्रह्मा है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरी यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्रह्मा सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भृकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसे ही लोगों ने कहा हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं वैकारिक भी समझना चाहिए। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करेंगे तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्तिभूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदनंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योतिर रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूप पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। सुश्रेष्ठ, ये सब के सब मेरी प्रिय प्रकृति देवी की अंशभूता है। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मा, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि का कार्य का संचालन करना चाहिए और मैं अपनी प्रिय का अंशभूता परात पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों और तथा उनसे भिन्न अन्याय विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितैषी हो। अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है और इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्राकट्य हुआ है और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। विष्णु, मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीनों रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है। वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण और निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होगे। अध्याय समाप्त। जय गुरु जी।